Hello my dear friends, welcome back to Sparkle with Jyoti. Hope you are doing absolutely amazing. If you are new here, then this is Jyoti here and I make videos about Sweden and related to Sweden, like all types of topics, including finding a job in Sweden, how to come to Sweden, what to do in Sweden, and yes, etc, etc. So if you are new, then consider subscribing, as you can get tons of information from this channel. And if you're old, then welcome back guys. And before I start on this topic, which you must have guessed from the title what it is, it's about payslip in Sweden. We get payslip and it's very happy day for all of us when we get a payslip. But there are multiple terms and very complicated concepts to understand, especially if you are working in a different, you have been working in different countries and this is your first time working in Sweden and receiving a paycheck or payslip from in Sweden. Then this video is for you. We will demystify and understand all the concepts and all the terminologies which are used. I would like to also advise that if you get this payslip, try to save it in a hard copy format. If you get it, you can also request to your HR in your company and save these payslips in soft copy or hard copy, whatever format you like, so that you can use it for further like future references, or if you have a student loan, or if you have any other purpose, you can definitely use this later, and that is very I would definitely advise on that. So let's understand how the payslip works in Sweden. And before I start the video, you know what to do. Please subscribe to the channel and let's get started. So today in this video, I'm going to talk about, mostly this is what happens in Sweden, but of course if you have like special cases or some special or unique companies that might have something else, but I'm going to generalize and take all top companies which everybody knows, like Volvo, SKF and several other companies in Sweden. So I'm going to take that standards and talk about the payslip. Okay, so usually, mostly in all the cases, it happens that you get your payment or your payslip before the salary comes into your account. So 25th is the day, 25th of each month, where you receive your salary slip electronically, of course, in your email box, or if there is any app which your company uses, that's how it works. और उस हिसाब से आपको वो payslip मिलता है, and then after one day or the next day or immediately at that day itself, आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, right? So this is how it is mostly. And कैसे होता है कि अगर कोई weekend आता है, मतलब उस डेट के आसपास, उस डे पे, लाइक 25th हैपन्स टू बी अ वीकेंड, या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे या फिर कुछ है, तो आपको हमेशा सैलरी पहले आती है आपके. सपोज फॉर एग्जांपल 25th इज अ नेशनल हॉलीडे, यू विल बी रिसीविंग द पे स्लिप एंड द पेमेंट बिफोर आइदर 24th या फिर 23rd. ओके, तो यूजुअली आपको जल्दी आ जाता है सैलरी और पे स्लिप भी. सो पे स्लिप में स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में मेंशन होती है वो है आपका नाम, ऑफ कोर्स, आपका पूरा फुल नेम, योर फुल नेम. इट ऑल्सो हैज़ योर पर्सन नंबर, जो अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे होता है वो, एंड देयर विल बी योर एड्रेस एंड योर बैंक अकाउंट नंबर. तो ये डिटेल्स यूजुअली मोस्टली इन ऑल द केसेस मेंशन होते हैं आपके पे स्लिप पे. नाउ द पे स्लिप विच यू रिसीव, यूजुअली आपको मतलब दो सिनारियोज यहाँ पे है. Either you can get the pay slip, like for example if it's a February month, you will get the salary for the month of January. तो उसमें आप कितने घंटे आपने काम किया, कितने अपनी छुट्टियाँ ली, and all that will be calculated and will be given to you. But there's another case which happens कि आपको उसी महीने की सैलरी उसी महीने में मिलती है. That is what happened. मैं जब प्रीवियस जॉब में काम करती थी तो वहाँ पे यूजुअली दिस इज़ टू हैपन. सो अगर जनवरी का महीना है तो 25th जनवरी को मुझे पूरे जनवरी का जो भी मैंने काम किया है वो मुझे सैलरी मिलती है, और वट एवर द रिमेनिंग डेज आर विच इज़ कैरिड फॉरवर्ड और गिवन मी इन द नेक्स्ट मंथ. तो नेक्स्ट मंथ में वो जो भी 4-5 दिन जो बचे हुए होते हैं महीने के, आई विल गेट द सैलरी फॉर दैट इन द नेक्स्ट मंथ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी नाउ. So the first term is utbetalningsdatum, that is the payment date on which you will be receiving the amount or payment in your account. जिस दिन आपको सैलरी आपके अकाउंट में आती है उसको बोलते हैं utbetalningsdatum. Okay. The next term is grundlön. This is nothing but the basic salary which is mentioned in your contract or the employment contract what you have received. तो ये जो amount है, this is the basic salary which is basically mentioned in your employment contract. और different terms भी
डिफरेंट टर्म्स भी है. फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को आपको आवरली बेसिस पे सैलरी देते हैं तो इट विल बी लाइक अ तिम लोन विच इज आवरली पे. और अगर मंथली सैलरी है तो इट विल बी मोनाड्स लोन विच इज़ मंथली सैलरी. तो ये मेंशन होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे और पेस्लिप पे भी ये क्लियरली मेंशन होता है. ओके. ऑल्सो दी ऑर्गेनाइजेशन नंबर विच आई फॉरगॉट टू टेल यू अर्लियर. ऑर्गेनाइजेशन नंबर भी जो कंपनी का कंपनी नंबर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन नंबर विच इज दैट इज ऑल्सो ऑलवेज मेंशन इन दी पेस्लिप. ओके. सो कीप दैट इन माइंड. द नेक्स्ट term is overtid which is nothing but overtime. So whatever extra hours जो आपने काम किया है या फिर whatever agreed upon, से फॉर एग्जाम्पल 40 hours per week आपके एग्रीमेंट में मेंशन है, उससे ज़्यादा अगर आपने काम किया है तो आपको ओवर टाइम पेमेंट मिलता है. वीकेंड्स ऑल्सो आपको ओवर टाइम मिलता है अगर आप वीकेंड्स में काम करते हैं, लाइक सैटरडे संडे विच इज़ यूजुअली अ हॉलीडे ईयर. नोबडी वर्क्स ऑन वीकेंड्स ईयर, बट अगर आपने काम किया है तो उसका भी आपको पेमेंट मिलता है. एंड ऑफ कोर्स चेक विथ योर एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या रूल्स हैं, डबल पेमेंट है या फिर नहीं है, वट एवर इट इज़. प्लीज़ रीड द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रिफर एंड go back to the agreement or the contract and read through it and try to understand all these important terminologies which is so important when money is involved, right? The next term which is also a very important term is UC loan, okay, which is a sickness pay. और यहाँ पे सिकनेस पे का फंडा थोड़ा अलग है. सो बेसिकली व्हेन इफ यू आर सिक जस्ट फॉर वन डे द पेमेंट विल बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर, बट इफ यू आर सिक फॉर मोर देन वन डे बेसिकली इट्स कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट बेसिकली, एंड दे पे टू यू. So for example, so basically how it works is that the first 14 days of your sickness you will be paid by the employer, like whoever is your employer जहाँ पे आप काम कर रहे हैं. लेकिन डे 15th ऑफ योर इलनेस अगर आप 2 वीक के मतलब ज़्यादा आफ्टर 14 डेज ऑल्सो इफ यू कंटिन्यू फॉलिंग सिक तो 15th डे से आपको जो भी पेमेंट मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट से मिलेगा, स्टेट से मिलेगा और आपके एम्प्लॉयर से नहीं मिलेगा. ओके. सो दिस इज़ हाउ द फंडा यहाँ पे पेमेंट का काम करता है. सो अगर आप सिक हैं तो मेक श्योर दैट यू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली और अच्छे से मतलब देख के आप अप्लाई करें बिकॉज आपको सिकनेस लीव अप्लाई करनी पड़ती है फुक शाकरे कसान में एंड देन दैट्स हाउ यू गेट पेड योर मंथली सैलरी. और ये जो पेमेंट आपको मिलता है सिकनेस का दैट इज 80% ऑफ योर सैलरी, इट्स नॉट 100%. सो मेक नोट ऑफ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. Next term is WAB. So WAB is something when your child is sick, okay, and अगर आपका बच्चा बीमार है और आपको उसका मतलब टेक केयर करने की ज़रूरत है, like if you need to take care of your kid and stay at home, then also the state will pay and not the employer. So आपको specially WAB apply करना पड़ता है and then you get the payment. But in the pay slip you might see a reduction of salary, but you will get the payment later on from the state. So make sure you're aware of this. Term is semester loan. Semester loan is nothing but the annual leave which you take. So you are allowed to take 25 days of annual leave. Usually people take it during summer or during winters depending on the requirement or their need. So basically ये जो amount है so like in your payslip it's mentioned. अगर आपने leave लिया हुआ है तो वहाँ पे mention होता है in the payslip. So the term is called semester tilag, okay, so you can see it, you can find it in your payslip. और दूसरा term है semester shutning. So that is also the leave in case you have not taken any leave, you have not used your annual leave, that will either get carried forward to the next year or your employer will ask you to take that particular leave या फिर आपको उसके against पैसे भी मिलते हैं. So depending on different employers and different rules, so make sure you read again your contract and understand ki what rule is applicable in that particular company. That's what will be followed. Okay. So the next term here which is called is traktamente, and that means is if you are traveling for work, मतलब आपको कंपनी से अगर कहीं पे भेज रहे हैं दूसरे कंट्री में या फिर कहीं और अगर आप जा रहे हैं आपके काम के लिए तो आपको मतलब इट डिपेंड्स अगेन ऑन द लोकेशन, ऑन द टाइप ऑफ वर्क एंड द अमाउंट स्पेंट देयर. तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है और अगेन डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव विद योर एम्प्लॉयर, बट यूजुअली दिस अमाउंट इज पेड सेपरेटली विच इज एक्स्ट्रा बिकॉज यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. एंड अगेन योर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कि आपका खाना, ट्रैवल अलाउंस क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, दैट विल बी मेंशन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन चेक विद द एम्प्लॉयर दैट इज वेल. द नेक्स्ट सेक्शन इन योर पे स्लिप will be
Arbeidsgivere Avgift. Okay, that means nothing but taxes and employer fees. Okay, so Skatt is nothing but tax. So it will be mentioned in one row after another. So first row will be mentioned, yes, the income tax taken directly from your salary. Okay, and the second section will be the employer fees, which is the money which is contributed by your employer, which doesn't have any direct impact on your salary, but good to know these two terms. Okay. Now last but not the least is called as semester dagar, which is your annual leave again. So as I said before that you are entitled to have 25 days of annual leave. 25 दिन की छुट्टी आप साल में ले सकते हैं, और अगर mandatory basically 20 दिन तो आपको लेना ही लेना है. 20 days you have to take leave, and the remaining 5 or whatever it is you are entitled will be carried forward for the next year. Okay. और वो जो कैरी फॉरवर्ड जो बचे हुए दिन है दैट इजिली कैन बी सेव्ड अप टू 5 years. ओके, तो आपके पे स्लिप पे एवरीथिंग विल बी मेंशन, लाइक हाउ मेनी लीव्स यू हैव टेकन, हाउ मेनी यू हैव नॉट टेकन, कौन से अनपेड है, पेड है, ऑल दैट थिंग विल बी मेंशन. द लीव्स व्हिच हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड एंड विल बी कैरीड फॉरवर्ड from previous years, as well as which will be carried forward the next years, will also be mentioned. Everything will be mentioned in your payslip. Okay, so I hope guys these were the most important terms that I think you should know in order to understand your payslip and mention and maintain your financial records if you need for any other reason, right? It's very important. I hope this video helped you and you got some new information. If you have liked the video, please do not forget to like, subscribe, comment and share. I'm sure it will help some of you or all of you. That is always my hope, and thank you for listening and thank you for watching guys. I'll see you in my next video. Till then, stay positive and stay happy guys. Take care. Bye bye.